बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईटा मॉडल टेस्ट फुल कोर्स संडे टेस्ट नंबर 9 ये डिस्कस करेंगे। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है और एमसीक्यूज़ हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ है? पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड स्टेन इन ऑर्डर टू स्टडी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के लिए जिस तरह आपको पता है हमारे पास फ्यूल्जिन स्टेन सबसे बेहतरीन स्टेन है। अगर हम डीएनए या क्रोमोसोम को स्टडी करना चाहते हैं तो यू नीड टू स्टेन that by Fulgin stain। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। दूसरा एमसीक्यूज कौन सा है? अच्छा, आइडेंटिफाई द मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। मिसमैच इन द फॉलोइंग पेयर्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन ये ठीक है, लाइसोसोम, इंटरसेलुलर डाइजेशन ये भी ठीक है, माइक्रोफिलामेंट साइक्लोसिस ये भी ठीक है, और जो हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम है तो ग्लाइऑक्सिसोम ये डीअमीनेशन नहीं करता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। डीअमीनेशन का काम लेवर सेल का है। डीअमीनेशन का काम किसका है? लेवर सेल का है, जिसमें अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को हम रिमूव करते हैं। Removal of amino group from amino acid is known as deamination. In which part of the chloroplast fixation of carbon dioxide results in the formation of sugar? तो यार ये तो स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, और आपको तो पता है कि डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज़ बनता है? डार्क रिएक्शन में हमारे पास क्या चीज़ बनता है? उसमें हमारे पास शुगर बनता है। नेक्स्ट है लिपिड मॉलिक्यूल्स हैव कैपेसिटी टू स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बिकॉज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी क्लियर है। द टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ओरिएंट अवे फ्रॉम द वाटर। अब वाटर को वो क्या काम करता है? वो रिमूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जब यार वाटर को रिमूव करता है, टेल ऑफ फास्फोलिपिड का टेल फैटी एसिड से बना है, तो वो जब वाटर को रिपेल करता है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है, और जिस तरह आपको पता है कि लैक्टोज हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है, मिल्क शुगर है। तो ये ग्लूकोज के साथ क्या चीज? गैलेक्टोज। ईस्टर लिंकेज, ये फास्फेट और OH के दरमियान, फास्फेट और OH के दरमियान जो भी बॉन्ड बन जाए तो उसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। विच वन एंजाइम कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? तो यार ये तो इंतहाई आसान है। ऑक्सीजनेज एक ऐसा एंजाइम है जो एक चीज़ को रिड्यूस और दूसरी को ऑक्सीडाइज करता है। अब एंजाइम catalyzing rearrangement of atomic grouping without altering the molecular weight। अब molecular weight को अगर alter नहीं करता और सिर्फ rearrangement of atoms करता है तो ये आइसोमेरेज है। आइसोमेरेज सिर्फ structural changes करता है, rearrangement करता है। Enzymes are the polymers of amino acids, क्योंकि enzyme protein in nature है। Which one form raw material for the coenzyme? So vitamins, coenzymes are vitamins derivative, तो इसका मतलब raw material ये है। In which compartment of the plant cell do the light dependent reactions of photosynthesis it occurs? तो light dependent reaction photosynthesis, लाइट रिएक्शन ये तो थाइलेकाइड्स में होता है।
Which of the following molecule is regenerated from the phosphoglyceraldehyde in Calvin cycle? डार्क रिएक्शन में PGA से राइबोलोज बाइफॉस्फेट ये रीजनरेट होता है. द इन प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट में इसके साथ मिल जाते हैं, NADP के साथ मिल जाते हैं. सॉरी. अब ये देखो क्या पूछा है हमसे पूछा गया है द एंड प्रोडक्ट्स. तो एंड में हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन में हमारे पास इनमें ATP भी होता है. ATP अब नेट हमारे पास नेट कैलकुलेशन हम करते हैं. नेट हमारे पास वन नॉन साइक्लिक फ्लो में हमारे पास 3 ATP और 2 NADPH2 ये बनते हैं. इसलिए ये हमारे पास द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक. अब ये है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन फाइनली ये लेता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में. द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो ये किधर है? ये हमारे पास है थाइलेकाइड में ये हमारे पास अवेलेबल है. थाइलेकाइड्स में ये हमारे पास अवेलेबल है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विद इन थाइलेकाइड्स. थाइलेकाइड के इंटीरियर में नहीं है, थाइलेकाइड मेम्ब्रेन में है. थाइलेकाइड के अंदर खाली जगह में नहीं है, विद इन थाइलेकाइड्स है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वायराइड्स? तो वायराइड के लिए जो स्टेटमेंट है, वायराइड ये सिंगल स्ट्रैंडेड इन्फेक्शियस RNA है. Which of the following enzyme is present in bacteriophage? बैक्टीरियोफाज के टेल में लाइसोजाइम होता है. TMV tobacco mosaic virus is a rod-shaped virus by the study of electron microscope. An infectious RNA particle without protein coat is called viride. Which of the following is a disease caused by viride? तो वायराइड इज प्लांट स्पेसिफिक. इट causes cadang disease of coconut, जिसमें कोकोनट के अंदर उसका ऑयल कम होता है या नहीं होता. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वर थॉट टू बी. तो पहले हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे, जिसके बाद इससे डेवलप हो गए हैं यूकैरियोट्स. डिड सी आर द होम ऑफ Which of the following organisms? तो डिड सी हमारे पास जो आर्किया में हेलोफाइल है, हेलोफाइल. एक्सट्रीमोफाइल में जो हेलोफाइल आर्किया है तो वो डिड सी का होम कंसिडर होता है. राइजोबियम बिलोंग्स टू अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया. ये नाइट्रोजन फिक्स करता है. The lipopolysaccharide layer LPS is the characteristic of the cell wall of gram-negative bacteria. ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया में म्यूरिन कम होता है, रिड्यूस म्यूरिन, तो उसकी जगह लिपोपोलीसेकेराइड लेयर होता है. The protist which live in the gut of termite and digest belongs to. तो ये लोग बात कर रहे हैं ट्राइकोनिम्पा का. वो टर्माइट की गट में रहता है और उसमें लार्ज डीएनए होता है, तो मतलब वो काइनेटोप्लास्टिडा में आता है. काइनेटो का मतलब है लार्ज और
प्लास्टिडा का मतलब है डीएनए, तो इसमें ट्राइकोनिम्पा में सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर डीएनए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट? तो मलेरियल पैरासाइट जब मीरोजाइट बनाता है तो मीरोजाइट के बाद ये आरबीसी की क्लीविंग शुरू करता है और इस दौरान मलेरिया होता है, शिवर एंड चिल वगैरह आता है। प्लाज्मोडियम ऑफ स्लाइम मोल्ड कंटेन, अब प्लाज्मोडियम और स्लाइम मोल्ड में इसमें बहुत सारे डिप्लाइड न्यूक्लियाई होते हैं, मेनी डिप्लाइड न्यूक्लियाई। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया अपीयर्स व्हेन, जब आरबीसी की बर्स्टिंग मीरोजाइट शुरू करता है, अभी भी बताया मैंने। डाइकरियन इज अ सेल इन फंजाई हैविंग 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इन प्लस इन, सेल को डाइकरियन कहते हैं। सॉरी 2 हैप्लॉइड है, तो ये तो डिप्लाइड है, तो ज़रा ये वाला ठीक है, ये n प्लस n है, वो डिप्लाइड था। The microspore produced in microsporangia germinates to form male gametophyte. Microspore male gamete और megaspore female gamete. Which of the following is a triploid structure? तो definitely endosperm है, 3n है। Double fertilization is the characteristic feature in most of the angiosperm. हर एंजियोस्पर्म में नहीं होता। Members of the order of Perissodactyla, तो वो Perissodactyla odd-toed hooved mammal है, odd-toed hooved mammal है। Artiodactyla even-toed hooved mammal है, तो Perissodactyla hooved mammal के लिए आता है। Archaeopteryx ये रेप्टाइल और बर्ड्स के साथ इसके कैरेक्टर मिलते जुलते हैं। An animal found from ocean was observed to have no tissue organization, जिस एनिमल में टिश्यू नहीं होता, पैराजोआ होता है, पोरेपरा होता है। Cells of the inner lining of the endoderm in diploblastic animals are called nidoblast, क्योंकि स्टिकी सेल्स होते हैं, स्टिकी सेल्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मतलब सिलेंट्रेट में इंडोडर्म के अंदर इनर लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं स्टिकी इन नेचर होते हैं। नीमेटोसिस्ट में बनता है, कैप्सूल बनता है, इसमें स्टिकी सब्सटेंस उसमें होती है, निडोब्लास्ट। अ फ्लैटवर्म which was divided into 3 pieces during an experiment and was kept in a nutrient medium, all parts grows into a new worm, the animals is planaria। अब हमारे पास जो प्लेटी हेलमंथिस है, प्लेटी हेलमंथिस, उसमें जो क्लास टर्बुलेरिया है, क्लास टर्बुलेरिया में प्लेनेरिया है, उसमें रीजनरेशन हो सकता है। बाकी ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा में रीजनरेशन नहीं होता। फाइबर्स लाइक हेम्प एंड फ्लेक्स ये स्क्लेरेन्काइमा सेल से ऑब्टेन होते हैं। द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इट इज कंसर्न्ड विद द एक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। Which of the following convert pepsinogen into active pump? तो पेप्सिनोजिन HCl जब इनएक्टिव पेप्सिनोजिन पर अमल करता है तो उससे पेप्सिन बनाता है। Which of the following does not manufacture digestive juice? तो definitely kidney digestive juice नहीं बनाता। Which of the following is not the function of liver? तो liver का काम हमारे पास
इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, क्योंकि इंसुलिन मैन्युफैक्चरिंग ये पेंक्रियास का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एसिसरी, एसिसरी ये नेसेसरी नहीं है, ये एसिसरी है। एसिसरी ऑर्गन्स इन डाइजेस्टिव, which of the following is not the part of accessory organ, accessory, तो accessory organ, तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन ये accessory डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है। लेवर accessory डाइजेस्टिव ऑर्गन है, पेंक्रियाज accessory डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और हमारे पास एसिनाई ऑफ द पेंक्रियाज भी accessory डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, accessory है ये, accessory डाइजेस्टिव ऑर्गन। द फोरामेन वॉल इन द फीटल हार्ट इज लोकेटेड इन, अब फोरामेन वॉल ये हमारे पास इंटर आर्टरियल सिप्टम में होता है, और जिससे ब्लू बेबी मतलब मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कलरेशन ऑफ द स्किन ऑफ द बेबी टर्न्स ब्लूइश। तो ये तो अभी मैंने डिस्कस किया, क्योंकि बेबी में हमारे पास अनक्लोज्ड फोरामेन वाल्व होता है जो इंटर आर्टरियल सिप्टम में होता है। लाइम्फ इज poured back to the सर्कुलेटरी सिस्टम। जब इसको हम सब क्लेवर मैन में लाइम चला जाता है तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में दोबारा मिल जाता है। Which of the following is not true for both T cell and B cell? तो T cell और B cell इसके लिए हमारे पास ये है ट्रू कि दे बोथ, ये नट ट्रू है, नट ट्रू, तो नट ट्रू, दे बोथ passes from the thymus। T cell thymus से पास होता है और B cell ये बोन मैरो से, तो दोनों सेल्स थाइमस से पास नहीं होते इस तरह। Which of these is specifically responsible for antibody mediated immunity? तो प्लाज्मा बी सेल, it is actually the type of B cell। अब B cell एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और T सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। T सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अब ये क्या है? T सेल हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। इससे पहले क्या था? B सेल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एवरी जीन स्टार्ट्स विद इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन हमारे पास AUG है मिथ्यूनिन के लिए। पार्टिकुलर tRNA मॉलिक्यूल बिकम्स अटैच। अब ये देखो, ये हमारे पास एक ट्रांसफर RNA है, ये इसका 5th एंड है और ये इसका 3rd एंड है। ये एक ट्रांसफर RNA है। अब इसके साथ मेथ्यूनिन 3rd पोजीशन पे आके अटैच होता है और दैट इज बिकॉज ऑफ अमाइनोसाइड tRNA सिंथेसिस। इस एंजाइम की बदौलत ये मेथ्यूनिन यहाँ अटैच होता है। नॉनसेंस कोडान्स मतलब स्टॉप कोडान्स, और स्टॉप कोडान्स हमारे पास कितने हैं? 3 है, UAA, UAG और UGA। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान इज नॉन सिंस? तो UAA, UGA ये दोनों AUG सिंस कोड है। द एंजाइम दैट कट्स द DNA फ्रैगमेंट्स इनटू टू एंड्स। तो अगर इक्वल कट है तो बाज एंजाइम ऐसे है जो इक्वल कट ब्लंट एंड और जो स्टिकी एंड्स होते हैं इसको अनइक्वल कट मतलब स्टेगर्ड कट कहते हैं। तो एंजाइम कभी स्टेगर्ड कट लगाता है, ये डिपेंड्स अपॉन एंजाइम। तो ये हमारे पास बोथ A एंड B इसमें करेक्ट है। मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर ऑन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो वेक्टर हम ज्यादातर प्लाज्मिड से लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो एविडेंस है इवोल्यूशन का, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज सिमिलर इन, सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम होता है, ऑल ऑफ दीज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द रेप्टाइल एंड बर्ड्स, रेप्टाइल और बर्ड्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली यूरिक एसिड है।
द मेरीन ऑर्गेनिज्म अमोनिया, तो अमोनिया है तो डेफिनेटली अमोनोटेलिक होंगे, अमोनोटेलिक। द ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज एयर sacs called alveoli. एस्ट्रोजन इनहेबिट्स द सिक्रीशन ऑफ, अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन एफिसिच की सिक्रीशन को कम करता है, एलिच रिलीज होता है ताकि वो ओव्यूलेशन कर ले। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिक्रीटरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद जो प्री ओव्यूलेटरी पीरियड होता है उसमें एस्ट्रोजन ज्यादा होता है स्लोली, तो एफिसिच की लेवल जब कम पड़ जाता है डे 14 पे तो एलएच पे रिलीज होगा। डिक्रीज एफिसिच और इंक्रीज एस्ट्रोजन काजेस द रिलीज ऑफ एलएच, ये तो अभी भी मैंने बताया। डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये तो कोडोमिनेंस है ना, ए और इस तरह बी, इस तरह, तो इसमें ये लेट सपोज आई ए है और ये लेट सपोज आई बी है, तो ये अगर दोनों एक्सप्रेस हो जाए, ये अगर दोनों इस तरह एक्सप्रेस हो जाए तो कोडोमिनेंस है ना इस तरह। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन हुज नंबर इज मोर देन 2, तो ये हमारे पास अल्टर्ड, तो इसको एलील कहते हैं, तो इसको मल्टीपल एलील नहीं, तो नन ऑफ दीज। अल्टर फॉर्म ऑफ जीन तो उसको एलील कहते हैं, एलील। Japanese 4 o'clock flower RR red is crossed with white flower R2R2, या इसमें आपकी कंफ्यूजन के लिए RR हमने लिखा है, तो the result phenotype is pink. Pink shows 60% redness and 40% whiteness. The condition in which individual have small skull microcephaly, ये disorder of embryonic disorders में ही आता है, embryo disorders. Muscle cells require a protein and that proteins are actin and myosin. The notochord cells that influence the surrounding by means of specific chemical, Spemann called it primary organizer. नोटोकार्ड सेल्स को जो सिग्नल देते हैं स्पेमैन ने उसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का नाम। नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एजिंग। इन ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन, जब ब्रेन से निकलते हैं तो डेफिनेटली क्रेनियल नर्व्स। स्पीड ऑफ द इम्पल्स कंडीशन डिपेंड्स अपॉन, अब डायमीटर ऑफ द एक्सॉन भी है इस तरह, और माइलिनेटेड शीथ भी है, तो इसमें बोथ। Which of the following muscle is voluntary, तो voluntary हमारे पास skeletal है, cardiac smooth ये involuntary है। Smooth muscles are found in, तो definitely hollow organ digestive tract में। Muscle fatigue is due to the deposition of lactic acid on skeletal muscles. The number of muscles in human body, it ranges about at least 650. Heat shock proteins are also called chaperones. In the following, which one is spring variety? तो जो रेडिश हमारे पास है ये हमारे पास स्प्रिंग वेराइटी है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो रहता है इसमें, एक रहता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में जीन थेरेपी नहीं आता, वैक्सीनेशन भी आता है, ड्रग ट्रीटमेंट आता है, और सेमिनार इन स्कूल कॉलेजेस ये भी आता है। अस्सलाम वालेकुम। In the name of Allah, the most merciful and the most gracious, dear students, good morning. Today we discuss ETA model test, chemistry portion, question number 7. In the reaction in 2 plus 3 is 2, 2 in each 3, the limiting reagent is none of these. It is reversible reaction. In reversible reaction,
there is no limit in excess reagent, because reversible reaction may never go to completion. जब एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, कौन सा सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, कौन सा बाद में कंज्यूम हो जाएगा, कौन सा रह जाएगा. तो रिवर्सिबल रिएक्शन में नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी भी कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो इसमें देयर इज नो लिमिटिंग इन एक्सेस. तो नन ऑफ दीज. 1 AMU is equal to 1.6 10 minus 24 gram. The number of AMU in 1 gram will be. We know 1 AMU is equal to 1.6 into 10 minus 24 gram. अब क्वेश्चन ये है, if there is 1 gram of substance, then it will contain how many AMU? AMU find करना है, ये आप सॉल्व करें, you will get, इससे आता है एवोगैड्रो नंबर. तो AMU इतना छोटा यूनिट है कि 1 ग्राम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर Na AMU. 1 gram contain Avogadro number of AMU. 2 gram will contain 2 into Avogadro number. 3 gram will contain 3 into Avogadro number. इसमें ऑप्शन A is correct. The molecular mass of hemoglobin is 67,200 gram per mole. F.3%. F.3% of iron is present in hemoglobin. How many iron atoms are present in one molecule of hemoglobin? तो apply the formula. Percentage of elements के लिए जो formula है apply करें. Percentage of iron, mass of iron यानी mass of element into 100 divide by molar mass. अब इसमें वैल्यूज पुट करें. Percentage of iron 0.33, mass of iron unknown X, molar mass 67,200. सबसे पहले आप ये फाइंड करें कि हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में व्हाट इज द मास ऑफ आयरन. ये आप सॉल्व करें, यू विल गेट 0.33 मल्टीप्लाई 67,200. (221.76). X is equal to 221.76 AMU. This is the mass of iron in one molecule of hemoglobin. अब calculate the number of iron atom. 221.76 इसको डिवाइड करिए 56 पर. The atomic mass of iron is 56. यानी mass of one iron atom 56. 56 AMU is equal to 1 iron atom. तो 221.76 is equal to what? तो इस वैल्यू को 56 पर डिवाइड करें, इससे आएगा 4. D. One molecule of hemoglobin contains 4 atoms of iron. If the required excitation voltage is given for which element the X-ray spectrum consists of 3 spectral line K alpha, K beta, K L alpha. तो सोडियम contain 3 shells. इसका एटॉमिक नंबर 11 है. K में 2, L में 8, M में 1. This is K shell, this is L, and this is M. When electron jump from L to K, K alpha. When electron jump from M to K, K beta. When electron jump from M to L, L alpha. So the spectrum of sodium consists of 3 lines: K alpha, K beta, L alpha. Option A is correct. The limiting lines of Balmer series lie in ultraviolet region. Generally बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन, लेकिन इसमें जो लिमिटिंग लाइन है देयर वेवलेंथ इज शॉर्ट. द लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लाइन इन अल्ट्रावायलेट रीजन. लिमिटिंग लाइन के अलावा अदर लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन. लिमिटिंग लाइन इन केस ऑफ बाल्मर सीरीज, लिमिटिंग लाइन इज in 1 to or into infinity. In case of Balmer series, when electron jump from infinity to second orbit, then
limiting, this is called limiting line, or the limiting line have shorter wavelength, shorter wavelength than visible light. Therefore, the limiting line of Balmer series lie in ultraviolet region. Limiting line के अलावा other lines of Balmer series lie in visible region. To be noted, limiting line lies in ultraviolet region. Limiting line के अलावा बाकी जो lines है, they will lie in visible region. The E1m of neutron is 0. Neutron has no charge. It has mass 1.67 into 10 raised power minus 27 kg. मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, तो 0. So the charge to mass ratio of all neutral particle is 0. To be noted, 19 में 0. Which electronic level will allow the hydrogen atom to absorb a photon but not emit? 1s. 1s ये lowest energy orbital है. इससे इलेक्ट्रॉन किसी और हायर को जब कर सकता है, लेकिन किसी और लोअर को जब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये तो लोवेस्ट है. इससे इलेक्ट्रॉन हायर को जा सकता है, लेकिन इससे तो लो ऑर्बिटल है नहीं, तो इससे इलेक्ट्रॉन किसी लोअर को जब नहीं कर सकता है, तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. अगर 1s में इलेक्ट्रॉन हो तो इट विल ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी, इट कैन नॉट एमिट एनर्जी. 1s. According to molecular orbital theory, the number of molecular orbital in oxygen 10. इसके लिए ट्रिक ये है, write the configuration of oxygen atom. 2px2 second oxygen, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है. हर एक ऑक्सीजन एटम में कितने ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5. तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, these 5 atomic orbital combine with these 5. तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल which are combined in oxygen molecule are 10. एटॉमिक इसमें 5s में है, 5s में है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल टोटल 10 है, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे? 10. इसके लिए ट्रिक ये है, एटम की कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर इनको कंबाइन करें. टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों ऑक्सीजन में 10 है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10 बन जाएंगे. डी. व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2? 2. बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है. बॉन्ड ऑर्डर, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम डिवाइडेड बाय number of atoms around central atom. तो इसमें कार्बन सेंट्रल एटम है, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 और कार्बन के इर्द गिर्द सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन एटम है. 2 पर डिवाइड करें इज इक्वल टू 2. बॉन्ड ऑर्डर इज 2. इट मीन कार्बन डाइऑक्साइड में बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देयर इज डबल बॉन्ड, 2 bonds. The orbital with highest energy is unhybrid. Unhybrid एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी हाइब्रिड मॉलिक्यूलर से ज्यादा होती है. हाइब्रिड में भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, मॉलिक्यूलर भी स्टेबल होते हैं. अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है हाइब्रिड से, मॉलिक्यूलर से. अनहाइब्रिड इज करेक्ट. Which of the following most closely resemble an ideal gas? Helium. In the given form, helium has the lowest boiling point. जब boiling point कम हो, attractive force will be weak. जब attractive force is weak हो, ideal gas character will be greater. तो helium shows more ideal behavior as compared to other gases. Helium shows negative Joule-Thomson effect due to its resistance to polarize. Helium molecules are very smaller in size. When
pressure is applied on it to compress it. So during compression, molecule come very close, the electronic cloud of the molecule repel each other, thus no attractive forces are developed. तो ये बहुत छोटा होता है, इसकी मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, पोलराइज नहीं, इस तरह पोलराइज नहीं हो जाते हैं. जब मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाए तो फिर टेम्परेरी लंडन डिस्पर्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा. तो हाइड्रोजन हीलियम ये दो गैसें नेगेटिव जोल थॉम्सन इफेक्ट शो करते हैं, बाकी तमाम गैसें पॉजिटिव जोल थॉम्सन इफेक्ट शो करते हैं. हाइड्रोजन और हीलियम दे शो नेगेटिव जोल थॉम्सन इफेक्ट. हाइड्रोजन और हीलियम negative Joule Thomson effect may what happens if a gas is compressed and if repulsive forces are developed between the molecule, it is called negative Joule Thomson effect. Positive Joule Thomson effect, अगर हम एक गैस कंप्रेस करें, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाए, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट. पॉजिटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट. तो नेगेटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट में रिपल्सिव फोर्स आर डेवलप, पॉजिटिव में अट्रैक्टिव फोर्स आर डेवलप्ड. तो रेजिस्टेंट टू पोलराइज. Rate of evaporation depends on surface area, temperature both. Rate of evaporation is directly proportional to surface area. जब surface area ज्यादा हो तो greater number of molecule will escape from the surface. Rate of evaporation will be fast. इस तरह अगर temperature high हो तो molecule की kinetic energy ज्यादा होगी, maximum molecule will escape from the surface. तो rate of evaporation is directly proportional to surface area, also directly proportional to temperature. All of the following contain hydrogen bonding except aldehyde. जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, इन सच मॉलिक्यूल देयर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद ऑक्सीजन, दस अल्कोहल में देयर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो तो हाइड्रोजन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. इस तरह अमाइन में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन, between two amine there are hydrogen bonding. Carboxylic acid में hydrogen is directly attached with oxygen, तो carboxylic acid में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड. अल्डिहाइड में ये अल्डिहाइड है, इसमें हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बन, नॉट विद हाइड्रोजन. तो जब हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच हो तो इट हैज नो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. जब हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न हो तो इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अल्डिहाइड में हाइड्रोजन इज अटैच विद कार्बन, नॉट विद ऑक्सीजन. तो कहने का मतलब यह है कि जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ अटैच हो, इन सच मॉलिक्यूल देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्डिहाइड, कीटोन, एथर में, alkyl halide में there are no hydrogen bonding because hydrogen is directly attached with carbon. Which of the following show only isotropy? Cubic crystals. Cubic crystal वाहिद crystal system है कि it show isotropy. What is isotropy? If same property is same in different direction, it is called isotropy. अगर सेम प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो, इट इज कॉल्ड एनआइसोट्रोपी. तो क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक क्रिस्टल शो आइसोट्रोपी, बाकी तमाम क्रिस्टल शो एनआइसोट्रोपी. यानी बाकी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन डायरेक्शन, व्हाइल द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन. इसकी वजह यह है कि फॉर क्यूबिक सिस्टम A is equal to B, B is equal to C, all the three sides are same, all the three angle are same. इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री मैक्सिमम है, इसलिए क्यूबिक क्रिस्टल में सेम प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑल थ्री साइड आर सेम, ऑल थ्री एंगल आर इक्वल. तो क्यूबिक क्रिस्टल में सेम प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर क्यूबिक क्रिस्टल शो आइसोट्रोपी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोवेलेंट क्रिस्टल एक्सेप्ट आइस. आइस तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, H2O. It consists of water molecule.
SiO2 में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बोरेंडम SiC इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, डायमंड में कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन के दरमियान। तो डायमंड, कार्बोरेंडम और SiO2 ये कोवेलेंट क्रिस्टल है, I says molecular crystals. Which reaction do you think has the highest value of Kc? In reaction में B में the two chlorine free radical react. Chlorine free radical is very reactive, तो this reaction is very fast and forward direction. जब forward direction में reaction fast हो तो maximum product will be formed, और Kc is a ratio between equilibrium concentration of product and reactant. product ज्यादा होगा, जब product ज्यादा हो Kc value will be maximum. तो B is correct. क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है, नेसेंट क्लोरीन है। Ice and water in equilibrium with each other. By increasing the pressure, the equilibrium will shift. ये ice है, ये water है। अब इस केस में मोल सेम है, 1 मोल ice, 1 मोल water. अब रूल के मुताबिक अगर मोल सेम हो तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट, लेकिन सही रूल ये है अगर मोल भी सेम हो और वॉल्यूम भी सेम हो तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट। अब ठीक है, इस केस में मोल सेम है लेकिन वॉल्यूम्स आर नॉट सेम। वॉल्यूम ऑफ आइस इज 9% ग्रेटर देन लिक्विड वाटर, तो 1 मोल ऑफ आइस हैज ग्रेटर वॉल्यूम, 9% ग्रेटर वॉल्यूम, और 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर हैज लेस वॉल्यूम। अब प्रेशर हैज इफेक्ट इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस वॉल्यूम। राइट साइड को वॉल्यूम कम है तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मोर एंड मोर आइस विल बी चेंज इनटू लिक्विड वाटर, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू राइट, क्योंकि राइट साइड पर वॉल्यूम कम है, तो फॉरवर्ड। द प्रोटॉन एक्सेप्टर इज, कौन सा स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है? अमोनिया। अमोनिया हैज लोन पेयर, तो इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। नाइट्रोजन विल डोनेट 1 लोन पेयर, इसे अमोनियम आयन बन जाएगा, तो अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बाकी है नो लोन पेयर, तो दे आर नॉट प्रोटॉन एक्सेप्टर। Pick up the Arrhenius acid or base. According to Arrhenius concept, species which give hydrogen ion in water are acid, species which give OH ion in water are bases. Na3 ये हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता है, B3 इसमें हाइड्रोजन नहीं है, Lcl3 में हाइड्रोजन, तो नन, इसमें there is no Arrhenius acid or base. For a certain reaction, rate is equal to this. What is the order of reaction? अब देखिए H2O, its power is 0. तो what is order? The sum of the exponent in the rate equation is called order. Exponent 1 है और एक पावर 0 है, 1 + 0 1, तो फर्स्ट ऑर्डर। रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट होते हैं देयर सम इज कॉल्ड ऑर्डर, 1 + 0 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वाटर इसमें एक्सेस में है। The reaction urea plus water urease, ammonia plus carbon dioxide is enzyme catalysis. इसमें enzyme urease is used. A reaction in which enzyme catalyst is used is called enzyme catalysis. This is the example of enzyme catalysis. Urease is enzyme. Which are the following concentration unit is temperature dependent? So molarity is temperature dependent because in molarity there is volume. Molarity is equal to number of moles divided by total number of dm cube. Dm cube volume है, तो molarity is inversely proportional to temperature. When temperature is greater, volume will be greater, molarity will be less. Molality में वॉल्यूम नहीं है, मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं है, W by W मास इसमें वॉल्यूम नहीं है। जिस टर्म में वॉल्यूम हो सच टर्म विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी में वॉल्यूम है तो मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बाकी 3 टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन टैप वाटर? द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज 1। और सोल्यूशन में सिंगल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि
सम इज इक्वल टू 1। जब सम 1 होगा तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। अब टेप वाटर ए सोल्यूशन, इट इज नॉट प्योर वाटर, इट कंटेन मेनी डिसॉल्व सॉल्ट्स। तो टेप वाटर में द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यानी सिंगल कंपोनेंट इज लेस देन 1। इस तरह टेप वाटर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट लेस देन 1। एज ए होल द मोल फ्रैक्शन ऑफ टेप वाटर इज 1। तो एक कंपोनेंट का 1 से कम होगा, लेस देन 1। Molality of 10% W by W in NaOH solution. 10% W by W in NaOH solution means that 10 gram NaOH in 100 gram solution. 100 gram solution. अब इसमें सल्यूट NaOH है, ये 10 ग्राम है। अब कैलकुलेटेड स्मॉल, इसको डिवाइड करें 40 पर, 40 is the molar mass of NaOH. Mass divided by molar mass is equal to number of mole, 0.25 mole. Mass of solvent, total solution 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 माइनस 10 कितना सॉल्वेंट रह गया? 90 ग्राम सॉल्वेंट है इसमें। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 पर डिवाइड करें, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इज इक्वल टू 0.09 किलोग्राम। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ केजी, केजी 0.09, 2.7 मोलर सोल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2.7 मोलर, इट्स मोलैलिटी इज 2.7। Which one is aerosol? Aerosol, it is one of the types of colloidal system, colloid solution. तो aerosol में disperse phase gas और dispersion medium, disperse phase liquid, dispersion medium gas. तो aerosol mean gas and liquid and gas. तो cloud, fog और mist. Cloud mean water vapors, fog water vapors, mist water vapors. तो cloud, fog और mist mean water vapors and air, liquid and gas. ये liquid है, liquid and gas is the example of aerosol. तो D is correct. Fog, cloud, mist, all these are the example of aerosol. All they are aerosols. Aerosol, liquid and gas. तो cloud mean water vapors and air, fog mean water vapors and air during morning time, mist mean water vapors and air during evening time. So all these are the example of aerosol. It is one of the types of colloid. Which one is not a state function? All of these. Enthalpy, internal energy, temperature, pressure, volume, they are state function. ये state function है। Change in enthalpy, change in internal energy, change in temperature, not state function. H enthalpy, temperature ये state function है। Change में तो हम change find नहीं कर सकते हैं, इनमें तो एक दफा change आया है, they are not state function. Remember, enthalpy, internal energy, temperature, pressure, volume are state function. Change in enthalpy, change in temperature, change in internal, not state function. So all these are not state function. Which one is thermodynamically stable? White phosphorus. आप बुक स्टडी करें तो द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर व्हाइट फास्फोरस इज 0. तो थर्मोडायनामिकली इट इज स्टेबल बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0. क्यों ये स्टेबल है? अवेलेबिलिटी की बेस पर. फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस इज अवेलेबल इन अबंडेंस, देयरफॉर इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड. What is the oxidation state of chlorine in CaOCl2? तो 0. CaOCl2 रूल के मुताबिक कैल्शियम सेकंड ग्रुप में है, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट -+2. ऑक्सीजन रूल के मुताबिक -2. इस एज ए होल कंपाउंड का 0 होता है, तो इसको हम जरूर 0 लेंगे. What is the chemical equivalent of calcium? 20. केमिकल इक्विवेलेंट सिंबल E से हम डिनोट करते हैं. केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी. बाय दिस फार्मूला वी कैन डिटरमिन द केमिकल इक्विवेलेंट. एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40, वैलेंसी 2, इट्स केमिकल इक्विवेलेंट इज 20.
This is chemical equivalent E. Which one will show ionic bonding? NaH में ionic alkali metal form ionic bond with hydrogen. PbCl4 इसमें lead higher oxidation +4 फॉर्म में है तो ये पोलराइजेशन करेगा तो ये कोवेलेंट है. PCl3 इसमें तो दोनों नॉन मेटल है, इसमें भी दोनों नॉन मेटल है. तो NaH में अल्कली मेटल है और हाइड्रोजन है. बिटवीन अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन देयर इज आयनिक बॉन्ड. Which oxide of potassium contain more oxygen than its normal? Superoxide. Superoxide में KO2. अब K2O2 इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है पर से और पर में ऑक्सीजन नॉर्मल से ज्यादा होता है. सुपर मीन ज्यादा. अब ऑक्सीजन 1:2 है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो सुपर ऑक्साइड. Which one is the most volatile? HCl. Given 4 halogen acid में it has the lowest molecular mass. जिस सब्सटेंस की molecular mass कम हो it will contain weak van der Waals forces. It will be more volatile. तो HCl due to least molar mass. All of the following are amphoteric except beryllium oxide amphoteric है, lead oxide amphoteric है, stannous oxide amphoteric है, SiO2 acidic है. The oxidation number of cobalt in this En stands for ethylene diamine. Ethylene di's oxidation state is 0, water 0, Cn-1. अब कोबाल्ट का अगर हम +3 ले ले तो नेट चार्ज +2 आएगा. +3 - 1 +2 तो इसमें कोबाल्ट का +3 है. Which of the following ion contain 1 unpaired electron? Copper +2. The oxidation state of copper +2 is 4s03d9. तो D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है. प्रोवाइड 1 इलेक्ट्रॉन टू ईच. तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कॉपर +2 में देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. When K4 Fe6 is dissolved in water, it will furnish dash ions per molecule. K4 Fe6 एक complex है. Complex are those which contain complex ion. इसको अगर हम पानी में dissolve करें, it will give 4 potassium cation और एक complex ion. Complex ion is that which is stable in aqueous solution. ये एक ion है. ये पानी में इस फॉर्म में होता है. ये मजीद सिंप्लीफाई या डिसोसिएट नहीं हो जाता है. तो 1 molecule of this compound gives 4 potassium, 1 complex ion, तो टोटल 5 ions. D एक complex ion देता है और 4 simple ion, तो 5. The coordination number of cobalt in the complex is. Coordination number is the number of covalent bond formed by the ligand with transition metal. कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल है, इसके साथ 3 लिगेंड अटैच है. इथाइलिन डायमाइन. इथाइलिन डायमाइन बाइडेंटेड है. एक इथाइलिन डायमाइन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं. 3 विल फॉर्म 6. तो इसमें द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6. विच वन इज ऑर्गेनिक? बक्की बाल ऑर्गेनिक है. बाकी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइट, साइनेट, thiocyanate वगैरह ये अनऑर्गेनिक. तो बक्की बाल इज ऑर्गेनिक. इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Lime water is a saturated solution of calcium hydroxide. The saturated solution of calcium hydroxide is called lime water. In sodium extract mean lysine solution. Lysine solution is also called sodium extract. In lysine solution, in sodium extract, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन आर प्रेजेंट इन आयनिक फॉर्म. तो नाइट्रोजन प्रेजेंट एज NaCN. अब इसमें NaC नाइट्रोजन आयनिक फॉर्म में है तो NaCN. सल्फर इज प्रेजेंट एज Na2S. हेलोजन इज प्रेजेंट एज NaX इन lysine solution या सोडियम एक्सट्रैक्ट. तो A is correct. Which one is alicyclic? All of these. Cycloalkane, cycloalkene, cycloalkyne, they are alicyclic. Alicyclic are those which are closed chain but have properties like open chain. तो example of alicyclic, cycloalkane, cycloalkene, cycloalkyne.
Pentane at 25 degree centigrade does not obey all of these. 25 पर पेंटेन लिक्विड स्टेट में होता है और ये लास्ट गैसों के लिए है, तो पेंटेन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. पेंटेन तो लिक्विड स्टेट में होता है और these three laws are for gases. तो all of these. Which of the following would you consider to be the comparatively more reactive? ये अल्कीन है, ये अल्केन है, ये अल्काइन है. ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह है. अल्कीन मोर रिएक्टिव देन alkyne, alkyne more reactive than benzene, benzene more reactive than alkane. तो alkane is the least reactive due to sigma bond. alkene में एक पाई बॉन्ड है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो alkene में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर एक्सपोज, therefore electrophile can take easily an alkene to C2H4. It is the most reactive in the given 4. Friedel-Kapp acylation is example SE, electrophilic substitution reaction. The characteristic reaction of aromatic compound is SE reaction, electrophilic substitution. तो Friedel-Kapp acylation में hydrogen of benzene is replaced by this electrophile RCO plus, यानी C3CO plus वगैरह इस तरह. Hydrogen is replaced by this electrophile. Friedel-Kapp acylation. It is the example of SE reaction, electrophilic substitution reactions. Which one is the most reactive alkyl halide? Ri. Carbon iodine bond is the weakest bond. During the reaction, it is broken down easily. Thus, it will give the fastest reaction. Which one of the following compound comparatively would react rapidly in SN2 mechanism? तो C, ये primary alkyl halide है और SN2 is given by primary alkyl halide. तो primary alkyl halide में SN2 occurs very quickly. 1,3-dihydroxybenzoic acid is known as risarcinol. ये बेंजीन है, इसके साथ अगर दो OH मेटा पोजीशन पर हो तो इट स्पेशल नेम इज रिसार्सिनोल. अगर आर्थो पोजीशन पर हो केटिकोल, अगर अपोजिट पोजीशन हाइड्रोक्विनोन तो रिसार्सिनोल. विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव? आर्थो हाइड्रोक्सीटालवीन. इसमें दोनों OH और अल्काइल दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, दे आर रिंग एक्टिवेटर. तो जब रिंग के साथ ज्यादा रिंग एक्टिवेटर ग्रुप अटैच हो तो रिएक्टिविटी विल बी ग्रेटर. अब इसमें क्लोरो है, क्लोरीन इज रिंग डीएक्टिवेटर, और बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटर, और ए में मिथाइल है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दोनों रिंग एक्टिवेटर है. तो रिंग एक्टिवेटर इंक्रीज द रिएक्टिविटी. द कंपाउंड कीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो वाटर विल बी एलिमिनेटेड एंड कीटोन इज फॉर्म. तो ऑन ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल गिव अल्डिहाइड. टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इन नॉर्मल कंडीशन, but in severe condition tertiary alcohol is oxidized to give alkene. The compound which you can say ester, RCOOR, तो C3COO, RCOOR है, this is ester. The characteristic reaction of SN reaction, S substitution in nucleophilic. The characteristic reaction of carboxylic acid are SN reaction. अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करें तो RCl HCl SO2. अब देखिए S में हाइड्रोजन OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, तो दिस इज SN रिएक्शन. तो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. How many phosphorus is required by an adult per day? 800 milligram. Choose the mineral considered as macronutrient and is essential for human life. Choose the mineral considered as macronutrient
and is essential for human calcium. Calcium macro है, बाकी micro है. Macro mean it is required in greater amount. Micro mean which is required in less amount. Which of the following contain nitrogen? नाइलॉन 6 इसमें नाइट्रोजन है. पॉलीथीन ये तो 3 से बन जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है. पीवीसी विनाइल क्लोराइड इसमें नाइट्रोजन है. टेफ्लॉन CF2 इसमें भी ये टेफ्लॉन है. पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन इसमें भी नाइट्रोजन नहीं है. तो डी नाइलॉन इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडेपिक एसिड. तो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन में नाइट्रोजन है, तो नाइलॉन 6 कंटेन नाइट्रोजन. Which one is basic oxochrome? All of these amino group, alkyl amino, dialkyl amino, all they are electron pair donor, all they are proton acceptor. Ozone layer is present in stratosphere. The stratosphere is also called ozonosphere. स्ट्रेटोस्फेयर में दिए रहे ओजोन लेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कह सकते हैं. कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ अनबर्न हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO. कैटालिटिक कन्वर्टर इन तीनों की एमिशन कंट्रोल करता है. द फंक्शनल ग्रुप रीजन इन IR स्पेक्ट्रम इज बिटवीन 1500 टू 4000 per centimeter. इस रीजन में we identify the functional group of organic compound. The number of peak given by the ethane thiol in NMR spectrum. ethane thiol है CH3 CH2 SH. अभी 3 प्रोटॉन एक ही एनवायरमेंट में है, A वन टाइप. ये दो ये एनवायरमेंट इससे डिफरेंट है क्योंकि कार्बन सल्फर के साथ अटैच, यहां कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है. तो दिस इज सेकंड टाइप BB. और ये टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट में है, इसके साथ अटैच है, तो C. तो इट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन. तो ऑप्शन C इज करेक्ट. दिस इज द एंड. Sunday test, physics, MCQs in full course. So MCQ number 5. MCQ number 5 is the equation of state of some gases can be expressed as this: P plus A divided by V square bracket close bracket open V minus B bracket close is equal to RT, where the system have their usual dimension of A. Now we have to find the dimension of A. Now P plus A divided by V square should be equal to constant. Now according to principle of homogeneity, the dimension of P should be equal to the dimension of A by V square, or the dimension of A is equal to P divided by V square. A is equal to P. P is pressure and its unit is Pascal, and 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square into divided by V square. Now here is multiply volume, which is meter cube ka is square, so A is equal to now Newton per meter square multiplied by m power 6, square is cancelled with here 4, so A is equal to Newton m power 4. So the dimension of A is equal to Newton ma kg meter per second square into meter power 4. So the dimension of A is equal to kg m meter into meter power 4, which is L power 5 t power minus 2. So this is the dimension of A, which is option number B is the correct option. Next MCQ. Next MCQ, MCQ number 6. The heat produced in a circuit depend upon resistance, current and time.
if the error in the measurement is 1% in resistance, 2% in current and 1% in time. Now the maximum uncertainty in the heat. So already know Joule's law, H is equal to I square RT. So the uncertainty in H is equal to, now here the uncertainty in current is given 2. So here is square, so 2 into 2% plus the uncertainty in R is 1 plus 1 into 1% plus the uncertainty in time is also 1, so 1 into 1%. So here is 4% plus 1% plus 1%. So the total uncertainty is 6%, which is option number D is the correct option. Next MCQ, MCQ number 15. Two vectors A and B are such that A minus B is equal to C and A minus B is equal to A vector minus B vector is equal to C vector, and A minus B is equal to C, then the angle between them is. Now here is given C, C vector is equal to A vector minus B vector. So its resultant will be C square is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. This is equation number first. And second, A minus B. Now C is given, which is A minus B. Squaring both sides, now C square is equal to A square plus B square minus 2AB. This is equation number 2. Now compare 1 and 2. Compare equation number 1 and equation number 2. Compare 1 and equation number 2. When we compare both the equations, so left side is same, right side will also be same. So here will be A square plus B square plus 2AB cos theta is equal to A square plus B square plus 2AB. Now here A square B square is cancelled with A square B square. Now 2AB cos theta is equal to 2AB. Dividing both sides by 2AB. If we divide both sides by 2AB, so cos theta is equal to 1. So theta is equal to cos inverse 1. So theta is equal to cos inverse 1 is equal to 0 degree. Option number A is the correct option. Next, which of the following vector is or perpendicular to the vector this? Now here is a vectors given. This is I unit vector, j unit vector and k unit vector. Now ij is the ij is perpendicular to k, so it means 4i minus 3j is equal to 7k. Next, an object with a constant speed. If speed is constant, it is not accelerated, might be accelerated, is always accelerated, also has a constant speed, so it might be accelerated if a body move in a circular path. So its speed is constant, but at every point its velocity is not constant, so it means that might be accelerated, which is option number B is the correct option. Next MCQ, the distance traveled by a body falling from rest in first second, second second and third second. Now time is given, t1 is equal to first, t2 is equal to second second and t3 is equal to 3 second. Now s is equal to vit plus half gt square. Now the distance traveled by body falling from rest, so it means initial velocity is 0 multiply t plus half gt square. So s is equal to, here we have formula to half gt square. Now if time is t1 is equal to 1 second, then s is equal to half and g is 10 and time is 1 cos square. So s1 is equal to 5 meter. In 1 second distance is 5 meter. Now if time is 2 second, t2 is equal to 2 second. So s2 is equal to half 10
into 2 square. 2 ones are 2 fives are 2 square 4, 4 fives are 20. So second distance is 20. Here similarly, if T3 is equal to 3 seconds, then S3 is equal to half 10 into 3 ka is square. 2 ones are 2 fives are 3 square 9, 9 multiply by 5, 45 meter. Now 3 distance. Here is 3 distance, one is 5, second is 20 and third is 45. Now for simplicity, divide by 5. So S1 will be 1, S2 will be 4, S3 will be 9. So 1:4:9, option C is the correct option. Next, MCQ number 35. A 40 kg body, MCQ number 5, a 40 kg body move with a speed of 2 meter per second, collide with a spring bumper of negligible mass and force constant is 100 Newton per meter. The maximum compression of the spring is. Now half K kinetic energy, half Kx square is equal to half mv square. Half cancel with half. Now Kx square is equal to mv square, या x is equal to mv square divided by k, या x is equal to under root mv square divided by k. Putting value and solve. So x is equal to m is given, which is 40, v is given, which is equal to 2 square, which is 4, divided by k is given, which is equal to 100. So here is 400 divided by 100. 400 divided by 100. When we solve, so we will get 0.20 zeros cancel with 2 zeros under root 4, which is equal to 2. So here is 2. Now 2 is not given. So mass is 40 kg and speed is 2 meter per second. So 2 square 4 and here is, so answer is 2. So it means here is option number D is the correct option. Next, MCQ number 36. Two bodies have masses in the ratio 1:4 and kinetic energy ratio 4:1. The ratio of the linear momentum is. Now masses ratio m1 ratio m2 is given, which is equal to 1:4. And energy ratio E1 ratio E2 is given, which is equal to 4:1. Then the ratio of the linear momentum means P1 ratio P2 is equal to dash. So already we know the relation between momentum and mass is P is equal to under root 2m into E. So P1 by P2 is equal to 2m E1, m1 E1, 2m2 E2. This is under root, this is under root. So P1 by P2 is equal to 2 cancel. Now here is 1 under root m1 E1 divided by m2 E2. So P1 divided by P2 is equal to, now m1 is given, m1 m2 is given 1/4 and energy E1 E2 4/1. So which is under root 1, which is 1, which is 1:1. So option number A is the correct option. Next, MCQ number 45. A wheel is rotating at 900 revolution per minute. Its axis, when power is cut off, it come to rest in 1 minute. Now the angular rotation in radian per second is square is. Now alpha is equal to delta omega divided by delta t. Now alpha is equal to final angular velocity, initial angular velocity divided by time. So alpha is equal to 2 pi theta 2 minus theta 1 divided by time. So alpha is equal to 2 pi, here is 0 minus theta 1 is 900 revolution per minute. So which is already is convert into meter radian per second square divided by 60 divided by
60. So alpha is equal to, when we solve, so we will get pi by 2, which is option number A is the correct option. Next, the speed of a homogeneous solid sphere after rolling down in an inclined plane of vertical height h from rest without sliding is. So it means, so its potential energy will be converted into kinetic energy. Potential energy is converted into kinetic energy linear plus kinetic energy rotational. So potential energy is equal to mgh, linear is half mv square and rotational is half m omega square. Here is I, half I omega square. So mgh is equal to half mv square plus half inertia of a solid sphere is 2 by 5 mr square, and omega is v square, omega square is v square by r square. When we solve, so we will get mg h is equal to, take half mv square common, so here is 1 plus 2 by 5. So when we solve, so we will get v is equal to 10 divided by 7 gh, which is option number A is the correct option. Next, MCQ number 55. A streamline flow, if the gravitational head is h, the kinetic energy and the pressure are. So already from Bernoulli equation, P plus half rho v square plus rho g h is equal to constant. Now if h is head, so dividing both sides by rho g, here dividing both sides by rho g h. So here is P divided by rho g h plus half v square by g, or dividing only by rho g, so plus here is h. So it means that the kinetic energy is this and height is this and pressure is this. So option number B is the correct option. Next, a tank is filled with water up to a height h. Let's suppose this is a tank which is full with water at a height h. Is allowed to come out of a hole P, one of the wall at a depth h below the free surface of water. The horizontal distance in term of h is, let's suppose here is a hole and water is fall from a height h. So what will be the range? So the formula for the range is x is equal to 2 h minus h, which is option number C is the correct option. Next, two simple pendulum have a time period t and 5t by 4. They start vibrating at the same instant from mean position in the same phase. The phase difference between them when the bigger pendulum completes oscillation will be 90. Option number D. How? Now omega 1 is given, which is equal to 2 pi divided by t, and omega 2 is given 2 pi divided by 5t by 4. Now phase changes delta omega into t. Now phase is equal to 2 pi t minus 2 pi divided by 5t by 4 into time t. So theta is equal to, take common 2 pi by t, 1 minus 4 by 5, and t is given, which is 5t by 4. Now when we solve, so we will get theta is equal to 2 pi divided by t. Now 5 minus 4, 1 by 5 into 5t by 4. 5 cancel with 5, t cancel with t, 2 1s are, 2 2s are, which is pi by 2. So option number D is the correct option. Next, MCQ number 66. MCQ number 66. The frequency of a vibrating body situated in air.
the frequency of vibrating body situated in air is so lower than its natural frequency. Option C is the correct option. The speed of the sound wave having a frequency of 256 Hertz compared with the speed of sound wave having frequency of 512 Hertz is dash. So speed of sound is independent on frequency, so it means will be remain same. Next, when a wave goes from one medium to another medium, now there is change in speed, amplitude, wavelength. So all of these will be changed. Next, one cannot see through fog because light suffer total reflection in the droplet, or light is scattered by the droplet. So light is scattered by the droplet of the fog. Option D is the correct option. Two sources of light are said to be coherent if wave produced by them have the same wavelength and constant phase difference. Same wavelength and constant wave difference. So here is option number C. Next MCQ, the third operation involved in a Carnot cycle is: first is isothermal expansion, second is adiabatic expansion, third is isothermal expansion, and fourth is adiabatic expansion. So third is isothermal compression. Next, water is used as a coolant in the radiator of car engine because water has high specific heat capacity, which is 4200. Option number C, B is the correct option. Next, a capacitor of capacitance C has a charge Q and store energy is W. If the charge is increased to Q, then the store energy, so already we know, half Q square divided by C. If Q is double, then energy will be increased 4 times. So which is option number D is the correct option. Next, equal charges are given to two spheres of different radii. Now the potential V is equal to K Q divided by R. It means potential is inversely proportional to R. So equal charges given to two spheres of different radii. Now the potential will be more if radii is less. It means option number A is the correct option. So your potential difference will be more on smaller r. Option A is the correct option. Next, a wire has a resistance 10 ohm. It is stretched by 1/10 of its original length, then its resistance will become. So already we know R is equal to rho L divided by A. R prime is equal to rho L prime divided by A prime. This is equation 2. We have to find R prime. So R prime divided by R is equal to L prime, A prime multiplied by A divided by L prime. A divided by L. Here is L. Now R prime is equal to L prime is 1.1 of L divided by A prime multiplied by A divided by L. Divided by L multiplied by R. So L cancel with L. Now new resistance R prime is equal to 1.1 A into R is given, which is 10 divided by A prime. This is equation 1. Now volume will be constant. It means A prime L prime is equal to A L. Now A prime is equal to A L divided by L prime. Now A prime is equal to A L and L prime is 1.1 of L. L cancel with L. So A prime is equal to A divided by 1.1. Put in 1. Put in equation 1. So equation number 1 become R prime is 1.1 A multiplied by 10 divided by A prime, which is A divided by 1.1. A cancel with A. So R prime
is equal to 1.1 multiply 1.1 multiply by 10. So R prime is equal to, when we solve, so 12.1 ohm, which is option number D is the correct option. Next, 3 conductors draws respectively a current of 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere when connect in turn across a battery. If they are connect in series across the same battery, the current flow will be. So in series, R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Now potential will be same. So it means R is equal to V is equal to IR, R is equal to I by V. I1 by Ohm's law, V is equal to IR. So R is equal to V divided by I. So R equivalent is equal to R1 is V1 divided by I1, V2 divided by I2, V3 divided by I3. So R equivalent is equal to V, same, current is 1, first is 1, second is 2 and third is 4. So R equivalent is equal to, take LCM 4, no 4V plus 2V plus 1V, which is equal to 7V. So R equivalent is equal to 7 by 4V. Now I is equal to V divided by R equivalent. So I is equal to V divided by 7 by 4V, which is equal to 4 by 7 ampere, which is option number C is the correct option. Next MCQ number 125. 2 long parallel wires carry a current of 10 ampere in the same direction. Now the force between them will be. Now this is 2 wire and carry a current in the same direction, then they will attract to each other because of magnetic field is in opposite direction. If the magnetic field is in opposite direction, due to difference of magnetic field, they will attract each other. Next, the unit of magnetic induction. The unit of magnetic induction is Weber per meter square. Weber per meter square. So option number A is the correct option. Next, a coil of cross-section area are 400 centimeters square having 30 turns in making 1800 revolution per minute. In a magnetic field of 1 Tesla, the peak value of the induced EMF is. So EMF is equal to NAWB. Now EMF is equal to N is given, which is equal to number of turns, which is 30, and area is given 400 centimeter square. Convert centimeter into a meter, which is 0.04. And next, omega is given, which is equal to 1800 revolution per minute. Convert revolution per minute in radian per second square. So 1800 multiplied by 2 pi divided by 60. 0, 0, 6, 1s are 6, 6 are 60 into 2, which is 120 pi radian per second square. Now omega is here 120 pi. Next, magnetic field is given, which is 1. When we solve, so we will get 226. Option B is the correct option. Next, an ideal transformer is used to step up an alternating EMF of 220 volt to 4.4 kilovolt to transmit 6.6 kilowatt of power. Now the current on the secondary coil will be. So the current on the secondary coil will be. So already we know P is equal to IV, or I is equal to P divided by V. So I secondary is equal to P into EMF secondary. Now I secondary is 6.6 divided by 4.4. When we solve, which is 1.5, option C is the correct option. Next, in AC circuit the resistance R. In AC circuit the resistance R is connected in series with an inductor L. If the phase angle between the voltage and current is 45 degree,
Now the value of induced reactance is, so tangent phi is equal to XL divided by R, or XL is equal to tangent 45 into R. So XL is, tangent 45 is 1. So XL is equal to R. Option C is the correct option. A choke coil is preferred to a resistor for reducing current in AC circuit because choke coil consume much less power, which is option number C is the correct option. 155, the increase in temperature of intrinsic semiconductor will increase the conductivity, option A. Next, the substance which undergoes plastic deformation until it breaks is known as ductile substance, which is option number A. PN junction diode work as an insulator if it connects in reverse, which is option number C. Region without free electrons and hole in the PN junction is known as depletion region. Next, what energy should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 10 power minus 10 to 10 power to 0.5 into 10 power minus 10 meter. So already we know the relation between lambda is equal to h by p, or lambda is equal to h divided by 2me. So under the root, so it means E is inversely proportion to 1 over, E is inversely proportion to 1 over lambda is square, yeah, E2 divided by E1, E2 divided by E1 is equal to lambda 1 divided by lambda 2 whole square, yeah, E2 is equal to 10 power minus 10, 0.5 into 10 power minus 10 is square into E1. So which is equal to, this cancel with this, E2 is equal to 4E1. So delta E is equal to E2 minus E1. So delta E is equal to 4E1 minus 1E1. So delta E is equal to 3E, which is 3 times of the initial energy. Next, photoelectric effect. Suppose the quantum nature of light because there is minimum frequency of light below which no photoelectron emit. The maximum energy of photoelectron depend only on the frequency of light and not on its intensity. Photoelectric effect is instantaneous process, so all of these. Next, X-rays, MCQ number 185. X-rays are penetrate through a longer distance in substance are called hard X-rays. Next, if the wavelength of first line of Balmer series of hydrogen is 27 angstrom, then the second line of the series is, so 1 over lambda 1 is equal to R 1 over n1 square minus 1 over n2 is square. So 1 over lambda 1 is equal to R, so 1 over 2 square minus first line, so 3 square. So 1 over lambda 1 is equal to R 1 over 4 minus 1 over 9. So when we solve, so we will get lambda 1 is equal to 36 divided by 5R. This is equation 1. Similarly, lambda 2, 1 over lambda 2 is equal to R 1 over 2 square minus 1 over 4 square. So when we solve, so lambda 2 is equal to 16 divided by 3R. This is equation 2. So lambda 2 divided by lambda 1 is equal to, lambda 2 is given, which is 36, 5R multiplied by 3R into 16. Now when we solve, so lambda 2 divided by lambda 1 is equal to 20 divided by
27 lambda 1. So lambda 2 is equal to 20, 27, and lambda 1 is given, which is 27 angstrom. So 27 cancel with 27. So lambda 2 is equal to 20 angstrom, which is option number C is the correct option. Next, MCQ number 195. The percentage of original quantity of the radioactive material left after 5 half-lives is, now n is equal to 5. Now undecayed quantity is, the percentage of the original quantity of the radioactive material is left after 5 half-life is. So undecayed quantity is 1/2 power n, which is equal to 1/2 power 5, which is equal to 1/32. Convert it into percentage. So 1/32 multiply by 100% when we solve. So we will get 3%. Option B is the correct option. Last MCQ. Gamma rays are singly ionized gas atom, helium nuclei, fast moving electrons, yeah, option D, electromagnetic waves. So gamma rays are electromagnetic waves. Okay, thank you. Hello dear students, I hope that all of you are safe and sound. So today's test is based on full course, right? Let us start. The first statement is, every girl must bring dash on lunch. There, her, both A and B, and none of them, right? Remember, if the word every, any, and no, when these words come before a noun, so that make the noun singular, right? It makes it singular. The noun becomes singular. So with singular, we use singular verb, right? We use singular verb with singular noun, right? So here, every is used before the word girl, right? So every girl must bring her own lunch, right? Singular verb will be used. So B is the right answer. She slipped dash the river, in the river, into the river, to the river, and none of these, right? The word in shows state. When you are inside something in state, right? Like in static form, right? And when you enter into a place or into something with motion, right? So you use into. The difference between in and into is, in shows state and into shows motion, right? So when something is already in some dimension, some 3 or 3 plus dimension thing or place, so you use in for that. But when it comes into that contact, or when it joins that, so the process of joining, we have to mention it with into, right? So she slipped in the river, no. When I say she is dash the river, then I can say she is in the river. But when I say she slipped, so slipped is actually a movement, right? So when show movement, you use into, right? So she slipped into the river, right? We use to when we have already discussed from, right? So we haven't discussed from, that she slept from dash to dash, right? So to is also not possible. So B is the right answer. He is marrying dash French girl, his family doesn't know. She is marrying an, a, the, and none of these. N is not possible because N comes before a vowel sound, but F is a consonant sound, right? So N is not possible. Then we have a and the. Remember, when you talk about something that others people don't know,
so you use a. And when you talk about something that other people know, you use the. So he is marrying dash French girl, his family doesn't know. So his family doesn't know that French girl, so it means that we have to use a with it, right? So he is marrying a French girl, his family doesn't know, right? I asked why dash leave the party. I asked why would he leave the party. I asked why he would leave the party, why he will leave the party, right? Remember, it is an indirect sentence, right? So in indirect sentence, you see, for making a question, you follow this order. Right? Where QU stands for question word, A stands for auxiliary, S stands for subject, and M stands for main verb. But in indirect question, the order changes. It becomes QSAM, right? So again, the question word, then subject, then auxiliary, and then main verb, right? So as it is indirect, so we have to follow this one, right? So I asked why is our question word, right? After the question word, we need subject. So subject is he. I asked why he. Then we need auxiliary. So we have, why don't I use will? Because it is past. So with past, we don't use will, we use would, right? So I asked why he would, and then main verb is leave the party, right? So I asked why he would leave the party. So B is our right answer. Choose the correct sentence. This is David's father's car. This is David's father's car. This is David's father car, and none of these, right? So no sentence is correct in all these three. Why? Because in the first sentence there is double apostrophe. So double apostrophe cannot come. You see? It's double apostrophe, right? So it's not possible. This is David father's car is wrong because David father, how do you make this connection? You have to connect David with father using an apostrophe. So when you use one apostrophe, you cannot use another. But there is only one apostrophe and their apostrophe is missing. So even if you use apostrophe, this will be incorrect, right? This is David's father car is again mistake because father car does not have any connection, right? So no sentence is correct. What can be the correct sentence? The correct sentence will be, this is the car of David's father. So you see, we have used single apostrophe and the sentence is correct. Clear? So in these three, no sentence is correct. What reason did he come here for? Spot the error. Remember, when we talk about preposition, so we say that a preposition will always come, it always comes before a noun or a pronoun. A preposition always comes before a noun or pronoun, right? So after the word for, there is no noun or pronoun, so for is the mistake, right? Because for is a preposition. Although it was raining, but we went to market. When the word although comes, you don't need to use another conjunction, right? But here you have used another conjunction, which is mistake, right? I have to help him, change into interrogative. I have to help him is simple present tense. And in simple present tense, the interrogative structure is do or does plus subject plus base form of the verb plus rest of the sentence, right? So I have to help him will become do I have to help him. Do I have to help him, right? So the correct answer is
C. Do I have to help him? Clear? Each of the cars, when each or each of comes and you use noun, so you have to use singular verb. You have to use singular verb, right? So the singular verb here is has. So each of the cars has got some mechanical problem, right? The police, remember police is always considered plural, right? So the police are blocking off the street where the robbery occurred, right? Are. They had to choose the winner dash the red, the yellow and the blue teams among, between, in between and none of these. Remember, we use among when we talk about 3 or 3 plus things mentioned in group, right? And we use between when we talk about 2 or plus things separate, when they are mentioned separately. Clear? So most of the people get confused when they see that there is red, yellow and blue. So it means there are 3 words. So with 3 we use among. No, but we use among with 3 or 3 plus things, but when they are mentioned in group. But here they are not mentioned in group, right? They are mentioned separately. So you have to use between with them, right? In between is not possible. So they had to choose the winner between the red, the yellow and the blue teams, right? If it were like this, they had to choose the winner dash the teams, dash the teams. If only teams was given, then you would use among, because then teams becomes a group, right? But here they have specified them, they have distincted them. Red, yellow and blue are 3 different teams. So you use between with them, right? Don't come after me, she warned, right? Don't come after me is an imperative sentence and it's a negative imperative. So you do, the structure is not plus 2 plus base form of the verb plus rest of the sentence. When you have got a negative imperative sentence, so the structure after the reporting verb is this. After the reporting verb, the structure is this, right? So not to based on the verb and rest of sentence. So she warned is our reporting verb. She warned. After this we have to use not to, and the verb is come, not to come after. And we know that first person changes into the subject, right? So she will become her. Not to come after her. So find this sentence here. She warned not to come after her. She warned to not come after her is wrong. She warned not to come after me is wrong, because me is not changed into her. And the correct sentence we already have, right? So A is the correct sentence. They made David park the car there, right? When you have got this kind of sentence, mad is causative verb here. Mad is causative verb here, right? Causative verb. So the structure is you have to apply the passive voice rule on this structure. They made David, so David was mad. David was mad. By phrase is not always necessary, right? And after this you have to use infinitive. You have to use infinitive. Infinitive mean 2 plus base form of the verb, right? So David was mad. Park will become to park. David was made to park the car there. The car there. Right? So the first sentence is David was made to park the car here. Remember, there does not change into here in passive voice, right? So it is mistake.
David was made to park the car there. David was made parked the car. Parked is not changed into infinitive, it's also wrong. And none of these is also wrong because we have the correct answer, and that is B, right? A falling light bulb hit him, right? So the subject is a falling light bulb is our subject. This is verb, this is object. So him will become he. Hit him, so we will use was. He was hit by, and then subject will change into object. A falling light bulb, right? So he was hit by a falling light bulb. He was hit by being fallen light bulb. No. He was being hit. No, because simple past changes into past continuous, not into past continuous plus being, right? This is also wrong. So the correct answer is A. He was hit by a falling light bulb. Find the most opposite meaning of subversion. Subversion means to destroy things, to dilapidate things, to change the structure of something, right? So the opposite of it can be compliance, when you follow things, right? When you don't disturb things. Clear? Find the word that bears the farthest meaning of sinister. Sinister is something that is ominous. Ominous in Urdu we call it manhus, right? So the word that bears the farthest meaning means the opposite meaning of manhus is definitely good, right? So A is the right answer. Choose a shirt dash red, blue and white. Again the three things are mentioned, but they are mentioned separately, so we have to use between, right? So choose a shirt between red, blue and white. Synonym of stentorian. Stentorian means noisy, very high sound, right? Very high sound. So the synonym can definitely be loud, right? C. Who was that fantastic man? She said to me. So it's a question. Who was that fantastic man? So the structure is, as I already told you, QSAM, right? So she asked me, the reporting verb, she asked me, and then the question word will be who. She asked me who, and then after it we have to use subject. So who that fantastic man, that fantastic man, and auxiliaries was, right? We don't have any main verb here. So who that fantastic man was, right? But as we know that when was come, so it changes into had been in indirect speech, right? It changes into had been. So was will become had been, right? So let's find it out. She asked me who that fantastic man had been. She asked me who that fantastic man was. It is grammatically it is correct, but according to the rules we do not actually use was. We change was into had been, right? So the correct answer is A. David is one of the doctors who. When you have this kind of sentence, you have to use the verb with the word that comes before the relative pronoun who. So with who it is the doctors. The doctors is plural. So with plural we use a plural verb, and the plural verb here is serve, right? So David is one of the doctor who serve people for the sake of humanity. Thank you very much.